People say that depression is not a real thing, and I used to believe also that डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब दिमाग का वहम है. बट आफ्टर सफरिंग फॉर ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन फॉर 1.5 year, I'm finally out for my second appointment. Let's see what happens. I'm on my meds for like a month, and it has somewhat worked. So I'm going to catch a train, and I'm at the station, and let's see what happens at the hospital. I'll keep you updated. So guys, we have reached AIMS और मैंने ये मास्क ले लिया है क्योंकि डिप्रेशन तो मुझे है ही, एंड आई डोंट वांट टू कॉन्ट्रैक्ट एनी अदर इन्फेक्शन. तो एम्स आ गए हैं. अंदर जाके आपको ओपीडी का हाल दिखाता हूँ कि कैसा रहता है. एटलीस्ट साइकियाट्री वार्ड का तो दिखा ही सकता हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज. Can I help you? Counter person said that we'll have to take another token. If you want to consult the doctor again, you'll have to take a token. So I'm gonna get in the line and get a token. So apparently we have got our token. Here it is, and this is my consultation booklet. So once you make this consultation booklet and pay for it, and you have to pay something like 30 rupees for it, you don't have to pay ever again. And when you come again for future consultation, they will give you a token which you'll take to your ward. So here are the lifts, but I don't need to take the lift because psychiatry ward is just on the first floor. So I'll just climb the stairs and reach my doctor. Damn the crowd, guys. The crowd is crazy here. Apparently ये वाले बुकलेट का एक बार वसूली हो चुका है, एंड वो अंदर जा चुका है नंबर लगाने के लिए. एंड अभी ये इतने सारे पेशेंट्स बचे हुए हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हियर फॉर दी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी. बट मेरे को एडिक्शन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम हियर फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में. या मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आज डॉक्टर मेरे को देख पाएंगे. तो वैसे व्यू बहुत अच्छा है इधर से. डैम द आर्किटेक्चर ऑफ एम्स. एनीवेज आई विल कीप यू अपडेटेड. Before coming to AIMS and its psychiatry ward, I used to think that this ward is for depressed and anxious people like me, but apparently most of the people here are addicts. I would say almost 90% of the people who are here are for addiction treatment, and 1% of the people you have things like schizophrenia and Alzheimer's, and they are mostly old peoples. And I would say only 8 to 9% of people here are for depression and anxiety treatment. So it's such a shame that the data says otherwise. The data says that about 40 to 45% of the population of India is depressed. Yet
when you visit a psychiatry ward of such a renowned institution like AIMS, and you realize that only 8 to 9% of people here are for the treatment of depression and anxiety. It really shocked me today. It will take time to see the doctor. Until then, I'm gonna sit and have some water, and once I get inside the doctor's ward, I'll give an update to you all. Stand here in the line, a lot of things hit my mind, and one thing that came across my mind and I realized how sad it is that 90% of the people who are here to see a doctor are addicted. And I'm like, what is happening to the people? And almost all of them, 99% of the people who are here for addiction treatment are youths. And I have talked to some of them. Some of them are addict. Some of them are addicted to heroin and things like cannabis, alcohol. It's okay to use something for recreational purposes, but when you start abusing it, it becomes nonsensical, and it really saddens me. What is happening to the youth? Almost all of them are addicts, and none of them care about the treatment. They are just here because someone sent them here. So it's really very big tragedy, I would say, and it's really sad. सो गाइज मैं आया था 9:30 बजे एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 PM। तो आप देख सकते हो कॉरिडोर पूरा खाली है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे से पहले जो लोग आए थे उनका हो गया, बट मेरा नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग वाज दैट यहाँ पे एडिक्शन वाले ज़्यादा लोग थे एंड एक्चुअल साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाले लोग जो है वो बहुत कम थे। मैंने कुछ साइकोसिस वाले पेशेंट्स भी देखे, कुछ सीजोफ्रेनिया वाले भी देखे। उन सब का भी ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है एंड आई एम इम्प्रूविंग। सो द डॉक्टर हैज़ मेड सम चेंजेस in my prescription. Some strengths have been increased and some medicines have been removed entirely from my prescription. देखते हैं 1 महीने खाने के बाद क्या होता है। So this was my day and now I am rushing क्योंकि मेरे को पकड़ना होगा एक ट्रेन, because if I don't catch a train बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा घर वापस जाने में। यू कैन सी द रश इन हियर एंड आई डोंट नो व्हाई जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरे को डिप्रेस्ड फील नहीं होता है। जब मैं बाहर रहता हूँ आई फील प्रीटी नॉर्मल, बट क्या अब क्योंकि मैं क्लिनिकली डायग्नोस हो ही गया हूँ तो फिर क्या ही किया जा सकता है। सो दिस वॉज माई डे, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आगे फिर मिलता रहूँगा, बाय बाय।